तो धम्मट्ठवग हम पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब है दोज हु अबाइड इन धम्मा, द जस्ट, धम्मपूर्ण, न्यायपूर्ण। और जो गाथा है उसका कॉन्टेक्स्ट है अहि तरह ब्राह्मण बद्धु, द स्टोरी ऑफ ए ब्राह्मण। वर्ष संख्या 266 267 है, जिसको भगवान बुद्ध ने एक ब्राह्मण के संदर्भ में बोला था। एक ब्राह्मण था जिसकी सुबह प्रातः काल भिक्षा के लिए जाने की आदत थी। पिंडपात के लिए वो अ, भिक्षा के लिए जाता था। एक दिन उसने सोचा कि श्रमण गौतम ने ऐसा घोषित किया हुआ है कि जो भिक्षा के लिए घर घर जाता है और वो एक भिक्खु है। तो अगर ऐसा है तो मुझे भी भिक्खु कहा जाना चाहिए। और ऐसा सोचकर वो भगवान बुद्ध के पास गया और उसने यही बात उनसे कही कि मुझे भी भिक्षु कहा जाए, क्योंकि मैं भी भिक्षा के लिए घर घर जाता हूँ। तो तब भगवान बुद्ध ने उसको उत्तर दिया, ब्राह्मण, आ, मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई भिक्षु बन गया क्योंकि वो भिक्षा मांगने के लिए घर घर जाता है, बल्कि आ, आ, अगर वो एक गलत धम्म को पालन कर रहा है और गलत आचरण कर रहा है तो केवल घर घर जाने मात्र भिक्षा मांगने से वो भिक्षु नहीं बन जाएगा। Only he who lives meditating on impermanence, unsatisfactoriness, and insubstantiality of the aggregate is to be called a bhikkhu. भिक्खु कौन है? जो पिंडपात के लिए तो भिक्षा मांगने के लिए तो जाता हो, लेकिन साथ ही जो अपने जीवन को अनित्य, दुख और अनात्म, जो हमारे 5 खंड हैं उनके ऊपर विचार करते हुए बिताता है, उसको भिक्षु कहते हैं। और उसके बाद भगवान बुद्ध ने ये वाला वर्ष, जो आगे 2 वर्ष है, उनको कहा, न तेन भिक्षुषो होति यावता भिक्षते परे, विस्संग धम्मं समादाय भिक्षु होति न तावता। योध पुण्यच्च पापञ्च बाहेत्वा ब्रह्मचर्य वा, संखाय लोके चरति सावे भिक्षुति उच्यते। So he is not a monk just because he lives on other alms. Not by adopting outward form does one become a true monk. One here who lives the holy life and walk with understanding in this world, transcending both merit and demerit, he is truly called a monk. तो वो भिक्षु नहीं है अगर वो ये सोचता है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर रहा हूँ तो मैं भिक्षु बन गया। केवल बाहरी वेशभूषा बना लेने से कोई सच्चा भिक्षु नहीं बन जाता। जो एक पवित्र जीवन को जीता है इस संसार में और इस प्रकार इस संसार में चलता है, जिससे कि वो पुण्य और पाप दोनों को ट्रांसेंड कर जाए, दोनों के परे चला जाए और ब्रह्मचर्य का जीवन जिए, उसको मैं वास्तव में भिक्षु कहता हूँ। ये दूसरे पद का अर्थ है। तो इसको मैं आपके लिए 2-3 सेकंड्स के लिए रोक रहा हूँ सो दैट आप लोग उसको पढ़ ले। इसके उपरांत जो इसके बारे में रिफ्लेक्शन है, विशाल जी वुड लाइक टू cover it himself. So Vishal ji, over to you. Thank you, Nikhilji. I just thought I would give a little context to why I decided to pick this. I think after our conversation last time and the questions that came up about Satipatthana and then a few other interactions afterwards, I thought maybe I could use this particular verse, which seems quite simple, but actually in a way, describes the path leading to the transcendence beyond punya and pap. So I thought this might be an interesting teaching from Luang Pu Dun, who we have looked at in a prior meeting. And so actually, Nikhilji, you could just go ahead and read this and translate it if you don't mind, and then I can take on from the next one. Okay, sure. So this is taken from Frugal with his words, Luang Pu Dun, from Gifts He Left Behind. A large group of Dhamma practitioners from
Buriram province, headed by a police lieutenant, Bunchai Kunantomat, the provincial prosecutor, came to pay their respect to Luangpu. एक्चुअली ये एक समय की बात बता रहे हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोविंस है बुरीडाम, वहां पर एक पुलिस लिeutenant थे, उनके साथ वो अपने कम टू पे द रिस्पेक्ट टू लुआंगपू, उनके लुआंगपू के पास आए और अपने साथियों के साथ, और अबाउट हाउ टू प्रोग्रेस फर्दर इन देयर प्रैक्टिस। ओके, बहुत सारे धम्म साधक थे, वो पुलिस कमिश्नर के साथ लुआंगपू के पास आए और उनसे पूछा कि प्रश्न पूछा कि वो अपनी साधना में कैसे आगे बढ़े, क्योंकि ज्यादातर लोग काफी प्रसिद्ध जो आचार्य थे उनके पास जा चुके थे और उसके हिसाब से वो अभ्यास कर रहे थे, और उन आचार्यों ने जो साधना के तरीके थे वो अलग अलग तरीके से बताए थे, व्याख्या की थी। और वो जो तरीके थे वो ज्यादातर ऐसा नहीं कि एक दूसरे से बहुत एक ही जैसे सिमिलर हो, because who had explained the practice in a varieties of ways that were not always in line with one another। जरूरी नहीं कि बिल्कुल एक जैसे एक दूसरे से मैच करते हो, और उसकी वजह से ये जो साधक थे उनको काफी परेशानी थी, मन में शंका हो रही थी। तो उन्होंने लुआंगपू ड्यून से एडवाइस मांगी कि वो उस तरह की कोई अभ्यास का मार्ग बता दे जो कि आसान भी हो और सही भी हो, और नहीं तो फिर उनको अदरवाइज इन साधकों को ये अभ्यास करने का समय निकालने में बड़ी परेशानी हो रही है। और अगर वो एक ऐसा मार्ग बता सके जो वास्तव में बहुत सरल है तो वो उनके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो लुआंगपू ने एक आंसर दिया, एक लाइन का, वॉच द माइंड, राइट एट द माइंड। अपने चित्त को उसी समय, वॉच द माइंड, राइट एट द माइंड, आई मीन दिस इज द इंग्लिश, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो चित्त को चित्त पर ही देख लेना। और मे बी दरअसल इफ आई एम रॉन्ग, वुड यू हेल्प? वॉच द माइंड, राइट एट द माइंड, सो चित्त में चित्त को देखना जैसे आप बोलते हैं, ये वो है क्या? I think so. What's the mind, right at the mind? So maybe now Vishal ji will further, explain it to us. Over to you, Vishal ji. Well, thank you for that. Yes, so this is very similar to the teaching that we read about last time with the incident from Ajahn Chah's book with the monk, I think his name was Potila, where we were told to close all the holes in the anthill and just leave the one open, and that was the one of the mind. So this is essentially just the practice of satipatthana, where the sati and the panya are watching the attention of the mind as it moves. So we can go to the next slide, and I'll have that in a little bit more detail. So I thought, I would share with the group what I'd gathered over my interactions with the Thai Kubajans, and perhaps this would be of some value to the group as well. So this is the right on the top is something that Ajahn Anand talks about a lot when he says, while the mind abides in a sense of self, make it a good self. So as long as we have avidya in the mind, and the mind has a sense of a me and an I, then at that stage, our practice is to make that a good I. And what is the process of that good I? That is the Eightfold Noble Path, which is the highest form of punya and parami. So talking about in the verse that we just read, with the Buddha gave, that you go beyond merit and demerit, but the first step in that is to transform all the demerit in the mind to merit. So you make a mind that's filled with goodness, punya, and parami, and only then can it go beyond. So what is that practice from? So that practice is the practice of satipatthana, where, as we've talked about before many times, and I know Professor Dharji has a very wonderful series of lectures on this from years ago, where the sati and the sampajanya go together. And so what exactly is sati? Sati is the faculty of the mind that brings awareness to a mental object or a feeling or a sensation, etc.
And sampajanya, or simply panya, in Thailand, they just use the word satipanya, and they always go together, is what assesses that object with wisdom, with a sense of what is right and wrong. And that the presence of panya with sati is what makes it samma sati, or the right sati. And so throughout the entire practice, this wisdom faculty, the panya faculty, goes through a series of iterative transformational steps. So at a very early stage, we may just have the understanding of the precepts, the 5 precepts, what we should do, what we shouldn't do. And that is the level of wisdom that the sati might have to access as we live through our lives, knowing we shouldn't do this, we shouldn't do that. And then gradually, as the path progresses, then that panya becomes stronger. It goes beyond just this idea of, what's wholesome, what's unwholesome, I shouldn't do this, I should do this, to then the wisdom of the 3 characteristics, because, and that wisdom is deeper. It allows the mind to be able to understand its true nature and to achieve a sense of purification. And then ultimately, that panya becomes very rarefied and at a very high level after the mind experiences emptiness, or what we call seeing the Dhamma. And then at that level, the mind obviously becomes even more pure, because now the wisdom faculty is at a very high level. So the greater the degree of panya, the greater the ability of the mind to purify itself. I can stop there, and Nikhilji, if you would like to maybe translate a little bit, and then I can move on. Yeah, sure. तो इस वाले पैराग्राफ में जो पहला पैराग्राफ है, इसमें बता रहे हैं अजान अनंत का एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जब तक हम अत्ता भाव में हैं, तब तक एक अत्ता भाव को भी जिसको हम कह सकते हैं अच्छा अत्ता भाव रखें और एक गुड सेल्फ की तरफ बढ़े, ऐसा हमें समझना होगा। और जो हमारी आर्य अष्टांगिक मार्ग पे चलने का अभ्यास है, ये शायद हमारा सबसे बड़ा पुण्य माना जाएगा, सबसे बड़ी पारमी है इस जीवन के लिए, इसी पर आगे बढ़ना चाहिए। जैसा विशाल जी ने एक समय कहा था कि इवन दिस इज अ कंडीशन पाथ लीडिंग टू अनकंडीशन, बट दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू। एंड सती पट्ठान प्रैक्टिस के बारे में फिर इसमें लिखा हुआ है कि सती पट्ठान में जो हम करते हैं, वो बेसिकली इसमें सती संपजन्य का एक टूल इस्तेमाल करते हैं। तो सती क्या है? सती है कि माइंड में जो भी ऑब्जेक्ट है उसको जान लेना, जो ऑब्जेक्ट उभर रहा है, और संपजन्य का तात्पर्य है उस ऑब्जेक्ट को विजडम फैकल्टी के थ्रू थोड़ा सा विचय धम्म विचय कर लेना। और जैसे जैसे हमारी सम्मा दिट्ठी स्ट्रांग होती है, वैसे वैसे पहिया भी हमारी साथ ही साथ स्ट्रांग होती जाती है। शुरुआती दौर में तो हम 5 शीलों का पालन करते हैं, और हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बाद में हमारी अंडरस्टैंडिंग जब और डीप हो जाती है, तो हम जो 3 लक्षण है उनको समझने लगते हैं, और अंततः हम एम्प्टीनेस की तरफ, शून्यता के अनुभव की तरफ जाते हैं। और जैसे जैसे हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारा चित्त शुद्ध होता जाता है। थैंक यू। Yes. So thank you for that. So then, I thought I would just break down the practice into the informal practice and the formal practice. And this is something that, once again, is all part of the Thai forest traditions teaching. And in the prior slide, we saw the teaching of Luang Pu Dun, who was known for very, very short, pithic teachings. And he basically just says, watch the mind at the mind. So what that is really, it's the practice of using the satipanya to train on the mind and the movement of the mind, the attention of the mind, and see as the mind grasps into different objects that come into its awareness, then you watch the rising of greed and aversion. And then this practice obviously is iterative. It gradually gets stronger over time, but what we're really watching for is how the mind moves and desires and clings. And then once we recognize that that is happening, then we use the 4 right efforts, or the samma vayama, to let go of the greed and hatred, and to change the mind from an unwholesome state of greed and hatred to a wholesome state. And so initially, we've talked about that in the last talk we had, that
this process can be quite difficult because the mind is not yet strong enough, doesn't have the wisdom to be able to just let go easily. So one has to use the antidotes for the different problems that the mind may encounter. And those are described in the suttas very well. And there was the one sutta, Majjhima Nikaya 20, not Majjhima Nikaya 11. Last time I had misquoted it, which talks about how to stop unwelcome thoughts. And so I thought it would be also important to point out that, and this is something that teachers talk about too, that when the mind is aware of an unwholesome mental state, there is a sense of urgency that should be employed to let go of that to the best of its ability. And the Buddha gives a very wonderful simile in that sutta. It's similar to finding a dead animal strung around one's neck. So one wants to get rid of it very quickly. So if at that stage in our practice we don't have the strength or the wisdom in the mind that by just looking at the aversion or the greed that it goes away because we've sort of understood the three characteristics that well, then the practice has to use some of the antidotes. There's some very wonderful talks by Ajahn Tan Anand and Ajahn Suchat who talk about this. In fact, Ajahn Suchat says something as simple as stop thinking at all times. When you don't need to use thinking, don't be thinking. Keep the mind always centered. And that's the process of keeping sati and panya in the mind. And this is also the analogy that Ajahn Chah gives of the single chair in the room. And that chair is the awareness of the mind being occupied by sati panya. So we don't allow the mind to cling to greed or aversion that may arise. And so this is the practice of satipatthana combined with samma vayamo, which is right effort, and samma sankappo, which is right intention or right thought. So we want to make sure that the mind is not holding on to unwholesome mental states or ayuniso manasikara. So I'll stop there, Nikhilji. हाँ, तो इसमें अगर मैं हिंदी में संक्षिप्त में बताऊं तो इनफॉर्मल प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, जो कि हम रोजमर्रा के जीवन में क्षण क्षण कर सकते हैं, कि अपने मन को या चित्त को दिन भर जस्ट ऑब्जर्व करिए, देखते रहिए कि उसमें लालच या द्वेष वगैरह उभर तो नहीं रहा, और अगर उभर रहा है तो तुरंत ही आप प्रयास कीजिए कि वो लालच और द्वेष निकल जाए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने इसके लिए जो हमें एक मानक दिया है कि उसको ऐसा समझिए कि जैसे कोई एक मरे हुए जानवर का अस्थि पंजर आपके गले में लटका हुआ है, तो जैसे हम उसको निकाल के फेंकते हैं वैसे ही हमें ग्रीड और अवर्जन के थॉट्स को भी निकाल के फेंक देना है। और जो सीनियर आचार्य हैं उन्होंने भी बोला है कि जैसे ही अनहोलसम स्टेट्स माइंड में जागे तो उनको हमारे को पकड़ के नहीं रखना है। एंड इसके लिए जो तरीका बताया गया है वो यही है कि हम मन में सति संपजन्य को हमेशा रखें, और साथ ही सम्मा वायामो अप्लाई करें, और साथ ही सम्मा संकल्प इनको अप्लाई करें। और शुरुआती दौर में हम एंटीडोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे मन में निवरण जागते हैं, जैसे द्वेष जाग रहा है तो मेत्ता का भावना का इस्तेमाल करें, ऐसे ही स्ट्रेटजीज है। तो ये मध्यम निकाय 20 में दी गई है, तो उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर जैसे जैसे हमारी साधना में हम पुष्ट होंगे तो और हमारे जो प्रकृति की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अनंत, अनित्य और दुख, वो स्ट्रांग होती जाएंगी, और फिर हमारे लिए ये अभ्यास थोड़ा थोड़ा फर्दर सरल होता जाएगा और हमारी प्रज्ञा धीरे धीरे पुष्ट हो जाएगी। और लास्ट में लिखा है कि जैसे जैसे ये क्षण प्रति क्षण इनफॉर्मल तरीके से हम अभ्यास करेंगे और ये पुष्टता की ओर जाएगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम प्रीति का अनुभव करें, हमारा मन थोड़ा सा हल्का महसूस करे और स्थिर महसूस करे और खुला महसूस करे, स्वतंत्र महसूस करे। थैंक यू मिशा। Yeah, thank you very much. And I think that's actually a very important thing to point out, that this informal practice is, I labeled it as informal, and it might seem less important, but it's actually extremely important, because as you imagine, we spend 90% or more of the day in what would be considered informal states, because we don't actually do formal samadhi practice for too long. So any practice that we utilize on the path has to involve how we deal with the mind's attention during the entire day.
And that is why in the Thai forest tradition, there isn't much of a culture of doing retreats and stuff like that, because the practice is supposed to be done all the time. Of course, there is long periods of silence during the rains retreats, etc. But the practice the Kubajans talk about is to constantly be doing it all over the day. And that is the practice of keeping satipanya and guarding the mind at all times. So we can go to the next slide, please. And then I thought, we just talk about the formal practice that probably most people in this meeting are already quite familiar with, but I'll just sum it up again. So the formal practice is the practice of trying to unify the mind in samadhi. But the process that occurs prior to attaining samadhi is a very important process, because that also utilizes sati sampajanya or satipanya, because the mental proliferation or the hindrances that arise during the whole day also occur during formal practice. However, if we've been practicing very carefully during the entire day during our informal practice, then we will notice that during the formal practice, the mind is already quite calm. That being said, we do utilize the same devices to let go, even when we are trying to enter samadhi. And that process of understanding the unique hindrances of the mind and learning how to let go of them generates a very important quality of panya in the mind, because it allows the mind to be able to be at ease with itself. And that, is a very important preliminary wisdom of the nature of the mind. So I'll stop there, Nikhil ji. अभी हम फॉर्मल प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, जैसा कि हम अभ्यास करते हैं अपने सत्र में बैठकर, तो उसमें उनका ये लिखा हुआ है कि हमें एक कम्मिठान को लेना है। वो हमारी सांस भी हो सकती है, या कोई मंत्र हो सकता है, या हमारी काया को देखना हो सकता है। और इसके थ्रू हाँ, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ सती। इसके थ्रू हम अपनी सती को अभ्यास करते हैं। कभी ब्रीथ पर ध्यान लगाते हैं, या मंत्र पर, या फिर काया पर। एंड हम जो एंटीडोट्स हमारे पास अवेलेबल है, उसके थ्रू हम जो हमारे अंदर प्रपंच चल रहा है, मानसिक प्रपंच चल रहा है, उसको हम दूर करते हैं, जिसमें हम प्रज्ञा और सम्मा वायामों को भी साथ में रखते हैं। एंड एक बार जब हमारा मन इस प्रकार का मट्ठान पर ध्यान लगाते हुए और इस प्रकार के एंटीडोट का इस्तेमाल करते हुए जब एक शांत हो जाए, और हम इतना देख पाए कि फिनोमेना कैसे अराइज हो रही हैं, कैसे उनका उदय और व्यय हो रहा है थोड़ा भी, तो फिर हमारे पास एक प्रारंभिक ज्ञान आ जाता है कि हम जो हमारे बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स है, उसके बारे को हम थोड़ा सा तो जान पाते हैं। गेदर से प्रिलिमिनरी विजडम ऑफ द नेचर ऑफ द बॉडी माइंड, तो जो हमारा शरीर और चित्त है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके बारे में शुरुआती नॉलेज मिलनी हमें शुरू हो सकती है। But the practice, in order for us to go into the mind to dwell in samadhi, we at some point have to stop that, and the thoughts sort of naturally dissipate, become quiet, and we basically stay with the kammatthana, and we allow for the arising of piti sukha and ekagata. And this can arise in different degrees, obviously, because it depends a lot on parami and prior life practice of generating samadhi. Also depends on, the nature of a specific mind. So certain minds have a greater propensity for it, and others less. But of course, practice does make a big difference. And so samadhi can take the form of kanika upachara or apana samadhi or jhana. And the goal is to try to do as much to develop our samadhi as much as we can. The Kubajans talk about trying to attain at least some early stages of upachara samadhi, because that gives the mind preliminary or minimum amount of stability to be able to then do the next task at hand. But again, we can only start where we are. So we just work with what sort of samadhi we have. We don't want to do this practice with a sense of clinging or aversion. We just want to do it in a very natural way and let it happen. Okay.
तो अभी इसके बाद जब हमारे पास जब हम कमठान पर ध्यान लगा रहे हैं और जो एंटीडोट है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे प्रपंच को रोक पाए, और उसके बाद हमारे पास एक शुरुआती नॉलेज आ गई है कि हम एराइजिंग और सीजिंग को देख पा रहे हैं, तो उसके बाद जब डिफाइलमेंट थोड़ा शांत हो जाते हैं, उसके बाद हमारे को हर चीज को छोड़ देना है, जो विचार कर रहे हैं, समवायमो कर रहे हैं, उन सबको भी छोड़ के केवल कमठान पर ध्यान रखना है। और जो उसकी वजह से जो अपने आप स्वतः प्रीति, सुख और एकाग्रता एराइज होती है, वो उत्पन्न होने लगती है, उसको जानना है। एंड उस प्रोसेस में वो क्षणिक समाधि, उपचार समाधि या अपान समाधि या कोई भी एक ध्यान हो सकता है, वो इस तरह के फॉर्म उस समय आते हैं। और जो समाधि है जिसको हम उपचार समाधि कहते हैं, वो मन को एक आधार दे देती है, शुरुआती आधार दे देती है, जिससे कि वो अगले कदम की ओर बढ़ पाए। Over to you, Um, Vishal. the next step, what is advised is that we try to stay in samadhi for as long as the mind will stay in samadhi. And then once the mind starts to move again, sort of the samadhi naturally dissipates. At that time, that's actually a very important part of the practice, because the mind has been purified to a certain level by the arising of piti and sukha. And then so we use that pure, calm, stable mind to bring up the contemplation of the body. And the way to do this is described very well in Majjhima Nikaya 119 and elsewhere in the Pali Canon too. But essentially, it is the process of breaking down the body into the 32 parts to see really inside the body, to strip away the skin of the covering of the body, which is actually described as the skin is what hides the anatta nature of the body. So we try to go inside the body. And then another way to do it is to contemplate how the body is just four elements. And a third way is to do the contemplation of death or corpse contemplation. So these are practices that seem quite daunting. And that's why it's recommended to do them once the mind has a certain degree of piti and sukha and therefore stability and strength. But once we do this, the point of doing this is to see into the sort of the emptiness of the body and mind, and that can lead itself to a state of further piti as the mind does see through these things to a certain level, and the further arising of piti can actually naturally cause the mind to go back, converge into samadhi again. And so this process it can go on, can be repeated over and over again. And the Kubajans talk about doing this hundreds of times in order to be able to see through the emptiness of phenomena. So I'll stop there. तो इसके आगे जब हमारे पास एक उपचार समाधि की स्थिरता आ जाती है और हम थोड़ा प्रीति, सुख, एकाग्रता का अनुभव करने लगते हैं, तो इस अवस्था में जब एक समय ऐसा आएगा जब प्राकृतिक रूप से हमारी समाधि धीरे धीरे कम होएगी, हम जागने लगेंगे, उस समय हमारे को बॉडी कॉन्टेम्पलेशन, कायानुपस्सना करनी है, 32 अंगों का विवेचन कर सकते हैं, या 4 धातुओं के आधार पर हम कॉन्टेम्पलेशन कर सकते हैं, या मरणानुसति कर सकते हैं। और चूंकि हमारे पास उस समय एक समाधि का आधार है, अदरवाइज तो इन चीजों को करने में थोड़ा भय भी लग सकता है, तो उस समय हम उनको आसानी से कर पाएंगे। और फिर हमारा जो मन है वो शून्यता को भी, जो हमारे 5 खंड है जिसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, वो शून्य है, इन बातों को भी बेहतर तरीके से रियलाइज कर पाएगा। और अगर हम इसमें करते हैं सही तरीके से और उसके प्रोसेस के दौरान अगर और प्रीति उत्पन्न हो जाती है, तो हम दोबारा से समाधि की अवस्था में जाते हैं और फिर से हम समाधिस्थ हो जाते हैं। फिर से जब समाधि थोड़ी सी टूटती है तो फिर से हम कायानुपस्सना कर सकते हैं। अगर फिर से हमारे अंदर प्रीति उत्पन्न होती है तो हम फिर से समाधि में जा सकते हैं। तो ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं कि इसको हम कई 100 बार कर सकते हैं। और ये जो इनफॉर्मल और फॉर्मल प्रैक्टिस है, जो हम क्षण प्रति क्षण अपने प्रति सजग रहते हैं और जब हम सत्रों में बैठते हैं ऐसे, तो ये दोनों ही बहुत आपस में काफी गुथी हुई हैं, बहुत क्लोजली लिंक्ड है। और
इन दोनों की अभ्यास ही हमारी जो समाधि की गहराई है और जो हमारी सती पहिया की शक्ति है, इनका अभ्यास उसको ही निर्धारित कर देगा। Thank you, Nikhilji. So in the last paragraph, the Buddha in the verse says going beyond merit and demerit. And so that process occurs in 4 stages. The first stage is the stage where the mind has seen the Dhamma for the first time and has been able to break through the Sakkaya Ditthi. However, this mind has seen through the non-self nature, but cannot always stay with that not-self nature, so has a habitual tendency to go back to the self-making. However, because it has irreversibly sort of broken this concept of an I, it cannot really ever seriously take up any mental states for a long period of time. So therefore, one of the characteristics of this individual is that they are able to let go of all mental phenomena at some point, so they don't get stuck in any sort of mental state for too long. And also importantly, at this stage, the mind has let go of its habit of clinging to the worst of the demerits. So therefore, that is the reason that they cannot be reborn in the lower realms, because their mind is unable to entertain ideas or thoughts clinging to really bad demerit. In the next 2 stages, the mind has a greater ability to access this emptiness more and more with more and more ease, and therefore the mind gets more and more purified and has even a lesser, these defilements have even a lesser hold on the mind. And then finally, what the Buddha talked in the verse we are discussing, the mind lets go of all karmically active bhava, becoming, because it doesn't cling really to anything. So it goes fully beyond papa and punya. Of course, at this stage, the individual, if you can call them that, still has to, sort of finish this particular life's bhava. So they will continue living in a way that seems quite on outward appearances to be like a regular person, but their mind is totally beyond both merit and demerit. Vishal ji, would you explain this? Although it still cannot stay free of self-making all the time, the sense of a self has been irreversibly shattered. So if it has been irreversibly shattered, then why not all the time? Is it self-making means you're talking about ahankar, or I'm not sure. Yeah, so what it is that at that stage, the mind has seen through the not self nature, but it doesn't have the strength yet to be in that state all the time. So does that make sense? So even though they can cling to a certain thing and sort of get upset about something, they will then sort of realize, oh, but this doesn't make any sense, because they've seen that there isn't really a self. So a very good example is Vishakha in the canon, who is suffering because her granddaughter died. And then the Buddha, says one word or 2 words to her, and she immediately lets go. So it's because the mind has seen through the lack of an I, but is not yet able to stay in that state all the time. And therefore, they will cling to certain things that come up. But then once they realize, oh, but this doesn't make much sense, and then they'll be able to access that not self realization in their mind, and will be able to let go of whatever they were clinging to. Does that make? या तो ये जो ये पैराग्राफ है में यहाँ पर जो स्क्रीन पर है, इसमें है कि हम पाप और पुण्य के परे कैसे जाएंगे। 4 स्टेजेस में हम जाएंगे। पहले स्टेज में जो हमारा चित्त है, मन है, वो धम्म को देखता है कि ये 5 एग्रीगेट्स हैं, और इसमें और उसके प्रति जो आसक्ति है वो टूट जाती है। सक्काय दिट्ठी सबसे पहले टूट जाती है। ऑल्दो इसमें कभी कभी वापस से वो क्लिंगिंग आती है, क्योंकि अभी पहली स्टेज में है। लेकिन कोई भी मेंटल स्टेट को हम बहुत देर तक पर्सनली नहीं लेते इस अवस्था में आने के बाद। उसके बाद जो अगली अवस्था है, उसमें हम जो सबसे बुरे पाप कर्म है, हम उनको समझ जाते हैं कि इनको कैसे छोड़ देना है, इनको कैसे नहीं करना है। तो हम ये श्योर हो जाते हैं कि हम अब लोअर रियाल में, निरय लोक में तो नहीं जाएंगे, जो प्रेत लोक है या पशु लोक है, हंग्री घोस्ट, उनमें तो नहीं जाएंगे। एंड ये शुरू की जब 2 अवस्थाएं आ जाती है, तो तीसरी अवस्था में
जो हमारा मन है अब की बार वो शून्यता की ओर ज्यादा अच्छे से समझता है, और जो हमारे अंदर सूक्ष्म विकार छुपे हुए हैं अब उनका भी पुल धीरे धीरे कम होने लगता है। और जब फाइनली चौथी अवस्था आती है जिसमें अरहंतशिप का वर्णन है, तो उसमें जो हमारा चित्त है वो सारे ही जो हमारे अंदर भव बनने के संस्कार हैं, आगे कुछ हो जाने के या जो पुराने कर्म संस्कार हैं, वो हम उनको चिपकते नहीं हैं, उनको छोड़ देते हैं, और इस प्रकार हम पाप और पुण्य से परे चले जाते हैं। या दिस वाज द स्लाइड। Thank you, Nikhilji. तो इसमें आप लोगों को अगर कहीं पर कोई बात पूछनी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसमें बस ट्रांसलेशन में था सर, विषम धम्मं समादाय, ये देख लीजिए। ना तेन भिक्षुसो होती यावता भिक्षते परे विषम धम्मं समादाय, इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? विषयों का धर्म। इस जो मतलब अलग टीचिंग को फॉलो करता है। विषम धर्म विभिन्न चीजें हैं जो कि अष्टांगिक मार्ग नहीं फॉलो कर रहा, उसके लिए दैट इज वन ऑफ द ट्रांसलेशंस। ओके, विषम धम्म, हाँ विषम धम्म। मैंने उसको ट्रांसलेट जो हिंदी में किया है, विषम धर्म अपनाने से न कोई होता भिक्षु। विषम धर्म मीनिंग नॉट द eightfold path but other path, because that person was not a follower of eightfold path. He had a basic Vedic, he was following the Vedic teachings. What does it mean, frugal with his words, Vishalji? Well, it's just that Luang Pu Dun was known to be a man of few words. So, like, Oh. what is explained here is that he just, all of his teachings were very short teachings, very to the point. So that's what it is. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. This is, in short, it is just a very nice, you can say, text whenever we want to remind ourselves. These two slides. Thank you so much. Sure, you're welcome. Thank you. Thank you very much, Vishal. Thank you. Thank you. Thank you, Vishal. Just one point I have to add, which I found very important in my practices, that when we talk of seeing the three characteristics, it should be all the five khandhas, not just body and mind, which is apparently apparent. There is a very important insidious factor called sanya, which operates, and we get trapped in it, and we keep on suppressing our, in terms of samma vayama, we try to push aside anger, we try to push aside craving, without realizing that the root of it lies in the wrong way of looking at things. So that sanya is a very insidious and hidden factor, which unfortunately doesn't get much talked of. So I personally found that being aware of that and handling that in a proper manner according to the wisdom is a great relief. It just dissipates the excessive effort which may be required. One can think about it and see. तो सर संन्या तो जब आपका थॉट आएगा then you will see before that. You can see that if you can try to see whether you're aware of sanya or not. So it's better to actually do it and see. Okay? We see the effect of it in terms of
sankharas arising. We don't notice white as a result. Yeah, I agree with that. The body mind, yes, it's supposed to refer to the five aggregates. That's exactly right. I just sort of abbreviated it, but that's right. It's supposed to be the five aggregates. Right. Thank you, Vishalji. Thank you very much for a nice presentation. We can sit till 6:55 now, Nikhilji.